Am I audible to you? Which is, am I audible to you? Which is Preeti. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So, good afternoon, students. Good afternoon, sir. In the last class, we have studied about steady state stability. Which is, tell me what is steady state stability? Which is, Yes, sir. what is steady state stability, or say, what is stable equilibrium point? What is stable equilibrium point? What is unstable equilibrium point? Sir, When when we applied uh, any torque and it's come again to original point, then it is stable. Otherwise, unstable. suppose this is the torque speed characteristics of a load motor system, and the curve of machine and the curve of load torque are plotted in the diagram. Now the crossing point is equilibrium point. The crossing point is equilibrium point. Now tell me, this equilibrium point stable or not? Stable. Stable. Good. But why? Here, starting and ending point is same. Starting and ending point are same. Sir, equilibrium means stable. The equilibrium point is stable. That means it is a stable equilibrium point. But why? Yes, sir. Why? Why? And how we check that? Load torque and machine torque are equal. At that point, this is a operating point, or say this is a equilibrium point. When machine torque and load torque are same, that point is called equilibrium point. Yes, That sir. means there is no acceleration and deceleration at that point. At that point, there is no acceleration or deceleration. That the machine or machine load system rotating with uniform speed. This is a equilibrium point. But whether this equilibrium point is stable or unstable, how do you check?
In the last class, we have done this. We Sir, have if to we applied any uh, torque, if it will come in its original positions, then it is stable. suppose we are giving it disturbance so that the speed of operating point increase a small higher level. Suppose this is delta omega m. Then at that point we have to check which torque is which torque value is higher. Tell me which torque value is higher here. TL Load torque, greater than T. machine torque. Load torque greater than machine torque. This is the machine torque point and this is the load torque point. From the figure we can easily see that the load torque is greater than the machine torque. Then what will happen if the load torque is greater than the machine torque? Then Deceleration. the speed of the system is decreased or say Decrease. decreasing nature. Yes, sir. So the machine goes down slow and come to a point. So we say that A is a stable equilibrium point. And what about B? Tell me. Here the speed will decrease and come to a point. And in case of B, tell me whether B is stable or unstable. Suppose this is the omega speed and we have give a small perturbation or say small disturbance. Then this is the load torque and this is the machine torque. Which one is higher value? Which one have higher value? Machine torque. Machine torque. If machine torque greater than the load torque, what will happen? Speed of the Speed will increase. increase, and the system will come back to the B point or go away from B point. Away from the points. That means the system go away from the B point. So B is a unstable equilibrium point, but A is stable equilibrium point. And what about C? Tell me, what about C? Tell me, what about C? C is stable or unstable? Stable. Stable. Why? Sir, here also TL greater than T. T greater than T.
Let's check. Let me check. Suppose we are taking a small perturbation. This is the operating or says equilibrium point speed, and this is small perturbation. Which torque is greater, machine torque or load torque? Which torque is greater, or which torque has higher value? machine torque. Machine torque. Why? Load torque. Sir, here negative axis. Yes, good Ritesh. This is Yes. in negative axis. So, which have higher value? TL. TL. Yes, sir. That means TL has greater than T. What will happen? If TL greater than T, what will happen? Speed will decrease. Then speed will decrease and System is unstable. system goes back to C point. Stable. Now omega m decreases and goes to C. Now tell me, in case of T, it is stable equilibrium or unstable equilibrium? Unstable. Unstable. Why? Machine torque greater than the load torque. Suppose we are taking this point here, T is greater than TL, Load. because C and D are in second quadrant. A and B are in first quadrant, but C and D are in second quadrant. That means here the torque are negative. So in case of D point, we can see the equilibrium point is D, and if we give a small perturbation there, then if the speed is increase a small level, say delta omega m, at that point we can say that T is greater than TL, because T is more positive than the load torque. So if the machine torque is greater than load torque, what will happen? What will happen, Ritesh? Yes, sir. What will happen if the machine torque is greater than the load torque? The speed Speed will increase. the speed will increase, and the operating System will be point and the operating point go away unstable. from D point. So D is a unstable equilibrium point. So D is unstable. A is a stable, B is unstable, C is stable, and D is unstable. So if we increase the speed from equilibrium point,
Then what should be the condition for stable equilibrium? Tell me, if we increase the speed from equilibrium point, say suppose at the equilibrium point the speed is omega m and the machine torque is T and the load torque is TL at equilibrium point. And if we give a small perturbation, then speed changes. Suppose in case speed changes is omega m, and in case of machine torque, the torque change h delta t, and in case of load torque, the load torque changes delta l, delta TL after perturbation. At equilibrium point, the speed is omega m, the machine torque is T, and the load torque is TL. And after a small perturbation of delta omega m, and the perturbation in torque, machine torque is delta T, and in load torque is delta TL. And if the equilibrium point is stable, then what is the condition? TL greater than T. That means we can write this is the condition. You can say the equilibrium point will be stable when the speed is increased. At that point, the load torque should be greater than the motor torque. We can say that to make the equilibrium point at a stable equilibrium point, we have to maintain this criteria. So first tell me what is the fundamental torque equation. Tell me the fundamental torque equation. It is, what is the fundamental torque equation? T minus TL is equals to T minus TL is equal to J J omega. ddt of omega m. Yes. Suppose this is our equation number 1, and after small disturbance, or say after perturbation, what is the equation at that time? T plus delta T minus TL minus delta TL is equal to J ddt of omega m plus delta omega m. This should be the equation. After small disturbance, it is. Yes, sir.
So after derivating this, j dt of omega m plus j dt of delta omega. So this is our equation number 2. Say this is equation number 2. If we subtract the equation 1 from 2, 2 minus 1, what we get? If we subtract the equation number 1 from 2, what we get? After subtracting equation 1 from 2, tell me. It is, Yes, sir. tell me. Subtract equation 1 from 2, what we get? Delta t Delta T minus minus delta TL delta tl. Okay, then equals to equals to Z d, d, d by dt omega n j d dt of dt omega n. delta omega m. So minus. After subtracting equation 1 from 2, we get this equation. Yes, sir. Okay. And if the perturbation, that means the disturbance is small, then we can say that this is basically like a straight line. If the perturbation is very small, then in any curve, in any curve means pit or curve, we consider that curve is like a straight line. Suppose I have a curve like that, but if I zoom there, that means for a small portion, suppose this portion, can I say this is a straight line? Yes, sir. So if we consider a small perturbation, then we can consider the load torque or say motor torque as a straight line. So suppose this is delta omega m, this is delta omega m, and this is delta t, and this should be delta tl, and this is dt
d omega n, and this is dtl by d omega n. The slope of the car, if we consider the small perturbation in speed delta omega n, and in case of motor torque, the small perturbation is delta t, then we consider the slope of that car pitch d d omega n. It means delta t is equal to n. And now tell me what should be the delta t l. Tell me. Ritesh, Ritesh. In case of small perturbation, we consider it is Yes, sir. when we consider the small perturbation, then we can say the perturbation, or say the curve are like straight line. So uh, we can write delta t is equal to dd omega mt delta omega m in case of machine torque, or say motor torque. Yes, sir. And in case of load torque, what we write? D d by d omega n into D omega n. dl This should be dl, and into this del should be del omega. del omega. We have to replace this value in previous equation. What is the previous equation? The previous equation is delta t minus delta tl is equal to j ddt of delta omega n. We have to replace these two value in this equation. Then what we get for that? Dt j after rearranging this equation, what we get? J ddt of
delta omega plus d dl by d omega n minus dt by d omega n. Is equal to 0. See that after putting the value of delta t and delta tl on the previous equation, and after rearranging we get this equation, which is, Yes, sir. have you understand that? Yes. Sir, we can cancel del omega m. No. Did not cancel because this is a first order equation. It's like first order equation. Uh, So from this equation we can write d delta omega n by dt plus 1 by j omega n dt, equal omega n omega n is equal to j. This is like a first order equation, and say dy dt plus a y also not t is equal to 0. This is like a first order equation. yes, sir. So what is the solution of that first order equation? Tell me. In mathematics class you have done it. Tell me the solution of that equation. The solution is like y is equal to c e to the power minus 80, where c is constant whose value is depend on the initial condition. C is constant whose value depends on the initial condition. That means at the time of t is equal to 0, what is the value of y? From that point, we actually get the value of c. So, considering this solution, tell me what is the solution of the above equation? It is Oh, what, sir? the solution of the first order equation.
what is the first order equation here? Ddt of y plus a y of function of t, which basically y is function of t, is equal to 0. This is a first order equation, and the solution of that equation is equal to y is equal to c e to the power minus at, where c is a constant whose value is depend on the initial condition of the value of that equation set. When I put that value of t is equal to 0, then what is the value of that y at that time? This is the value of t basically. So from the above speed equation, consider the at the time of t is equal to 0, the initial value, say delta omega m, the initial value is say delta omega m 0. At time t0, the value of delta omega m is equal to delta omega m 0. Consider that. Then tell me the solution of the above equation. Which equation? This equation. Compare that. Compare these two equations. The above equation is also a first order equation. So tell me the solution of that above equation comparing with that equation. And I tell you what is the initial say initial value of the speed change is delta omega m 0. So tell me the solution with this. Yes, sir. Compare that the above equation with the first order equation. If we have a equation like that, then the solution of that equation is y is equal to c e to the power minus at. The value of c is depend on the initial condition. C is basically constant, and the value of the c is depend on the initial condition of that y. So if we consider the value of the speed change at t is equal to 0 is delta omega m 0, then tell me the solution of the above equation. This should be delta omega m is equal to delta omega m 0 e to the power minus 1 by j dtl by t omega m minus dt t omega m into t. Can we write that? Can I actually write that? It is. Yes, sir. समझ में आया कुछ? सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा। ये देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अगर होगा, मान लीजिए ये डी डी टी ऑफ वाई प्लस ए
वाई टी। वाई टी मतलब वो वाई टी का फंक्शन है, हम्म, मतलब टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा एक इक्वेशन है, देन उसका सॉल्यूशन होता है y इजिकल टू सी ई टू द पावर माइनस ए टी। ये एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन होता है। ये कैसे मालूम चलेगा, ये ऐसा ही क्यों होगा? ये आप लोग मैथमेटिक्स के क्लास में सीखा। सो अगर ऐसा एक इक्वेशन होगा हमारे पास, तो उसका सॉल्यूशन हम क्या क्या लिखेंगे? दिस। लास्ट वाला स्टेप कैसे आया सर? लास्ट में जो डेल ओमेगा इक्वल्स टू डेल ओमेगा अच्छा, एम। ये पहले बताओ, ये जी, जो अगर हमें एक बार हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये पहले बोलो। ये जो y इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस 18। हाँ, ये हुआ ना। अब कंपेयर करो, वो दो इक्वेशन को कंपेयर करो। कौन सा इक्वेशन? इस डी डेल इक्वेशन को ओमेगा एम और बाई टी टी इक्वेशन को कंपेयर करो। देखो, y का वैल्यू क्या है? डेल ओमेगा। डेल ओमेगा। देन सी आ रहा है। सी का वैल्यू क्या है बोला मैंने? कांस्टेंट। इट इज ए कांस्टेंट and the values depend on the initial condition. That means if the value of t is equal to 0, at that time what is the value of y? That is the value of c. t जब 0 होगा तब y का वैल्यू कितना है, वही होगा c का वैल्यू। Here we considering at the time t is equal to 0, the initial value of delta omega is delta omega m0। ये हम कंसिडर कर रहे हैं। वो कांस्टेंट जो सी है वो हम पहले ही कंसिडर कर ले रहे हैं। अब समझ में आया? रितेश, अब समझ में आया कि नहीं बोलो? सर डेल ओमेगा इक्वल्स टू के बाद राइट हैंड साइड में जो लिखे वो कैसे है? कंपेयर करो ना। ये सी का वैल्यू हमने क्या, ये तो ले लिया पहले ही। देखो टी इजिकल टू, ये क्या कह रहे हैं, सी का वैल्यू क्या किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो टी जब 0 होगा तब वाई का वैल्यू जो होगा वो ही है सी का वैल्यू। तो वाई मतलब क्या है? डेल्टा ओमेगा एम। वाई का वैल्यू क्या है? हाँ यस सर, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा। हम कंसीडर कर रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 0 में उसका वैल्यू होगा डेल्टा ओमेगा एम 0। ये हम कंसीडर कर रहे हैं, वो वैल्यू हाँ हमें पता है यस। पहले, मान लीजिए। तो पहले से हमको पता है, इसीलिए हम वो कंसीडर कर ले, मान लीजिए। उसके बाद ई टू द पावर माइनस 80 होगा। तो यहाँ टी इक्वल्स टू जीरो कंसिडर किया है। हाँ, टी के इक्वल टू 0 कंसीडर करने के बाद वो सी का वैल्यू एक्चुअली आ गया हम लोगों को। ये है सी का वैल्यू, मान लीजिए ये है हमारा सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू बैठा दिया। हम्म उसके बाद ए का वैल्यू कितना है? Which one is A in that equation? This value is A. यस सर। So first we have to write minus, then the value of A is 1 by J into d omega m of TL minus d omega m of T.
This is the value of A basically. Yes, sir. It is. ये तो हमारा Okay, sir. A हुआ ना. A हो गया OT. हाँ. अब इसे तो थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, वो पहले जो मैथमेटिक्स में क्लास हुआ था उसमें देखना पड़ेगा जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये ड्राइव्स के चैप्टर में अब जब ये स्टडी करेंगे ना, यहाँ पर कोई सोल्यूशन कैसे आता है हम नहीं दिखाएंगे, कि सिर्फ हम अब बताएंगे कि सोल्यूशन क्या है। यहाँ बहुत इक्वेशन होगा ऐसा, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे आता है ये हम लोग नहीं सीखेंगे यहाँ, क्योंकि ये सब आपको मैथमेटिक्स के क्लास में सीखना था। यहाँ पर हम सब सोल्यूशन बोलेंगे, इसका क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है। Okay, sir. ओके। अब going to the next topic, load equalization. The next topic is load equalization. फ्लाईव्हील मालूम है ना रितेश? Sir, फ्लाईव्हील क्या है वो पता है ना आपको? flywheel. हाँ फ्लाईव्हील, यहाँ पर थोड़ा सा लगा. Yes, yes, sir. Okay. Suppose I have a electric hammer. Suppose I have a electric hammer. What is the say load and torque equation, say with respect to time? What should be the torque curve? Suppose I have a electric hammer. With respect to time, the torque curve should be like that. मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हैमर है, उसका टॉर्क कर्व कैसा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? रितेश? Yes, sir. एक बार मैक्सिमम पे होगा, फिर उसके बाद जब उसमें आप फोर्स रिमूव करेंगे तो फिर मिनिमम पे आएगा, हाँ. फिर मैक्सिमम होगा. Then the torque curve with respect to time like that I have drawn in figure. It should be like that. Yes, sir. Okay. Then what should be the current of that motor with respect to time? What should be the current curve? The nature of the current curve should be also like that. करंट कर्व कैसे होगा वो मोटर का?
as it is. मतलब क्या हो रहा है जब हमें ज्यादा As टॉर्क लग रहा है एट द टाइम ऑफ हाई टॉर्क द मशीन also take high high current. current, and when the torque requirement is less, then the motor consume less current. That means the nature of the current is also like the torque versus time curve. ऐसा ही होगा. Yes, sir. So वो जब सिस्टम से वो जब ऐसे करंट लेगा कब ज्यादा ले रहा है कब कम ले रहा है तो सिस्टम में क्या होगा. Suppose the nature of current, suppose this is also current versus, suppose this is also current versus time curve. So the voltage of a system कैसा होगा. कोई मान लीजिए हमारे एक सिस्टम है जो एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ा हुआ है. मान लीजिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक इलेक्ट्रिक हैमर. वो क्या हुआ है उसका कर्व टॉर्क वर्सेस टाइम कर्व हमने ड्रॉ कर दिया. करंट वर्सेस टाइम कर्व भी ड्रॉ कर दिया. अब उस सिस्टम में क्या होगा. Means voltage level का कर्व यस. वो रिवर्स होगा करंट का. रिवर्स मतलब मतलब पहले लो होगा फिर हाई होगा. लो होगा फिर हाई मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा. हाँ, yes sir. इज इट डिजायरेबल. Not, no. This is not a desirable type. That means load. Yes sir. So supplier not to supply the power to a hammer, electric hammer power plant or say electric hammer industry. Suppose there is suppose we have a industry. There are so many electric hammer or say electric cutting tools like that. There are so many machines. The nature of the current with respect to time is like the diagram. It is also in case of pressing machine the current with respect to time is like the diagram. प्रेसिंग मशीन में भी ऐसा ही होगा. Yes sir. सो सप्लाई जो एक्चुअली जो सप्लायर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा है वो लोग क्या ऐसे सप्लाई देना चाहेगा कि चाहे नहीं चाहेगा. नहीं चाहेगा. क्योंकि उस इंडस्ट्री ने फ्लक्चुएशन है. उसके वोल्टेज लेवल को और वो उसका जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना डिस्टर्ब कर रहा है ना. Yes sir. सो the supplier did not want to supply this kind of industry or they don't want this kind of actually consumer. So what is the remedy. Sir, what is the? What is the remedies. हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि वो सप्लायर भी हमें सप्लाई देना भी चाहेगा फिर उसका सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा. हम क्या Can I करेंगे. use automatic stabilizers? That means we have to do something that the current curve should not like that. में इतना चेंजेस नहीं देना है. ऐसा कुछ करना है जो करंट का इतना फ्लक्चुएशन वो घट जाए. ऐसा कुछ करना चाहिए. Yes sir.
मान लीजिए हम क्या किया, वो मोटर के साथ जो लोड कनेक्ट है उसमें एक फ्लाई व्हील लगा दिया, उससे क्या होगा? अब बोलिए, फ्लाई व्हील आपको तो पता ही होगा। Suppose we have connected a flywheel in between motor and the load, and here the load is like electric hammer, say pressing machine, is like that. तो उसमें क्या होगा? फ्लाईव्हील क्या करता है? व्हाट इज द स्टोर फंक्शन करता ऑफ फ्लाईव्हील? स्टोर करता है। वो एनर्जी स्टोर करता है। हम्म, जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा वो सप्लाई देगा, और ज्यादा एनर्जी आएगा तो वो स्टोर कर लेगा, यही ना? यस सर। If we connect a flywheel between motor and load, then the maximum, or say maximum rating of that motor should be less from the previous one. हम अगर एक फ्लाई व्हील लगा देंगे लोड और मशीन के बीच, तो पहले जो रेटिंग था मोटर का उसे हम घटा सकते हैं। हम कैन वी डिक्रीज द रेटिंग ऑफ द मोटर, इट इज यूजिंग फ्लाई यस व्हील, सर। इट इज यस सर। हम वो मोटर का रेटिंग में कुछ कमी ला सकते हैं if we use a flywheel यस सर। between motor and load। अगर फ्लाईव्हील नहीं था तो उसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? इस कर्व से बोले, इस कर्व से डबल हो बोलिए। रहा है सर। उसका मैक्सिमम टॉर्क का रेटिंग इतना होना चाहिए, दिस पॉइंट डबल। इतना होना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर एक फ्लाई व्हील लगा देंगे तो उसका मैक्सिमम रेटिंग इतना होने से ही काम चल जाएगा, होगा ना? यस सर। कैसे हो रहा है ये? फ्लाईव्हील से वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जब ज्यादा रिक्वायर होगा वो सप्लाई देगा, सर। अब ज्यादा एक्सेस आएगा तो वो स्टार्ट कर लेगा, ऐसे ही होगा ना? एक्चुअली इफ वी suppress the fluctuation, if we suppress the fluctuation of source with this kind of little arrangement, this is called actually load equalization। हम लोग अगर ऐसे फ्लक्चुएशन को घटा सकते हैं तो हम इसे ही लोड इक्वलाइजेशन कहेंगे। मतलब क्या हुआ है कि एक्चुअल जो सिस्टम में है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, लेकिन वो जो सोर्स है उसके पास इतना फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, ड्यू टू द एडिंग ऑफ फ्लाई व्हील। इफ वी एड ए फ्लाई व्हील इन बिटवीन मोटर एंड लोड, then the fluctuation comes to the source is very less with respect to previous one,
ऐसे ही होगा ना रितेश? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ए लोड इक्वलाइजेशन. इससे मशीन का कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. हाँ, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, उसका रेटिंग रिड्यूस हो जाएगा, उसका लॉन्जेविटी भी ज़्यादा हो जाएगा. Means economical. The system is become more economical. Yes, sir. So that why our interest on load equalization. I hope you all will understand what is load equalization. अब समझ में आया? बोलिए सब. दीपक, Yes, sir. लोड इक्वलाइजेशन समझ में आया क्या है? दीपक, Yes, sir. तो समझ में आया क्या है लोड इक्वलाइजेशन? Yes, sir. थोड़ा सा बोलो क्या है. Tell me what is load equalization? दीपक, एक्चुअल जो सिस्टम है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर है. द नेचर ऑफ द current of actual system is fluctuating, so it may disturb the voltage level of that system. To reduce the fluctuation in voltage level or say stability of that system, we have used such a thing that we can suppress the fluctuation. What we make an arrangement by which we actually suppress the fluctuation, that arrangement is called load equalization. Okay, this Yes, sir. what is load equalization? You tell me. Yes, sir. When we operate electric hammer or a pressing machine during during such type of condition, uh, torque will be fluctuation. Obviously, current will also fluctuate. So such types of condition will not desirable. Yes. So which will be overcome through something like that flywheel, so we can reduce the fluctuation. Good. Then what is actually load equalization? To reduce fluctuation, The system, system will be economical. the system is economical. The system will basically adding with that system by which we reduce the fluctuation
दिस इज कॉल्ड बेसिकली लोड इक्वलाइजेशन। मतलब इफेक्ट हम सेम ही रख रहे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन को घटा रहे हैं। तो लोड में जो effect, the loading effect is the same, but the fluctuation in source, we are reducing that fluctuation by some arrangement. This arrangement is called load equalization. मीन्स फ्लाईव्हील को भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी एक अरेंजमेंट है। हाँ हाँ, इसीलिए बोल रहे हो। ऐसा कुछ कर रहे हैं ओके। जिससे लोड का जो इफेक्ट है वो सेम ही रहे, लेकिन सोर्स में जो इफेक्ट हो रहा था, जो फ्लक्चुएशन था, उसे हम घटा रहे हैं। We are reducing the fluctuation in source by some means, that is called the load equalization। मतलब वो सेम ही इफेक्ट है, लेकिन हम कम रेटिंग का मोटर यूज करेंगे उससे। मीन्स इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम सोर्स को इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो मोटर है उसका रेटिंग घट जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट का। हाँ हाँ, मतलब ये लोड जो है वो सेम ही है, लेकिन जो हमारा जो इनपुट था, इनपुट साइड, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, उसे हम घटा दिया by adding a flywheel in between the motor and load। Okay, now taking the attendance: Ritesh, यस सर। Deepak, यस सर। Anjali, Jiaul, यस सर। Avinash, यस सर। Tanushree, Preeti, यस सर। सर तनुश्री। Akshay, यस सर। अक्षय। यस सर। अक्षय, आप बोलिए एक सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में चल रहा है, वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, हम कैसे बोलेंगे? अक्षय सर बोलिए। मतलब सर लोड सर कर्व से सर चेक कर सकते हैं सर, अगर सर सर मैकेनिकल सर और लोड टॉर्क में अगर सर ग्रेटर है, मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से मतलब ज्यादा रहा तो सर मतलब स्टेबल पे रहेगा, अगर उससे कम रहा तो अनस्टेबल पे रहेगा। मतलब लोड टॉर्क मतलब अगर ज़्यादा है मोटर टॉर्क से, तब ये स्टेबल होगा। अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो, यस सर। अगर स्पीड डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? सर लोड टॉर्क को मतलब उस समय ज्यादा होना पड़ेगा मोटर टॉर्क से स्टेबल रहने के लिए। तो हम जब स्पीड इंक्रीज करते हैं, जब यस सर। स्पीड डिक्रीज कर देंगे तब क्या होगा? स्पीड सर डिक्रीज करने समय सर मोटरिंग उसका सर थोड़ा सा कम जाएगा तो फिर वो अनस्टेबल होने लगेगा। तो तब क्या कंडीशन होना चाहिए? If we increase the speed, at that time the condition is TL greater than T. But when we decrease the speed, then what is the condition at that time? सर टीएल ग्रेटर देन टीएम। T greater than TL or TL greater than TL? Which one in which torque is more at that time? If we decrease the सर speed, सर लोड टॉर्क लोड टॉर्क। load torque. Deepak, यस सर। जब स्पीड हम इंक्रीज कर दिए थे, तब कंडीशन था क्या? TL ग्रेटर देन T। जब हम स्पीड डिक्रीज कर देंगे तब क्या कंडीशन होगा?
TL greater than TM. तब कौन सा टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, लोड टॉर्क या मशीन टॉर्क? हम अगर स्पीड, लॉस टॉर्क। अगर पहले समझो कि हम अगर स्पीड डिक्रीज कर देंगे, अगर वो सिस्टम स्टेबल है तो उस पॉइंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर सिस्टम स्टेबल है, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमको स्टेबल करना है, हम अगर स्पीड डिक्रीज कर देंगे तो स्पीड वही आना चाहिए कि वहां से चला जाना चाहिए? सर लोड हमको स्टेबल करना है सिस्टम लेस को। देन मशीन टॉर्क सर। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है, उसका स्पीड है 1500, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हम बोल रहे हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हम उसका स्पीड घटा दिया, अगर वो स्टेबल है तो स्पीड में ही रिटर्न आएगा कि वहां से चला जाएगा? रितेश? यस सर, जैसे कि कंसेप्ट में हम लोग देखें टीएल ग्रेटर देन टी रहेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, सिस्टम स्टेबल होगा, तो उससे तो जब बोल रहे डिक्रीज करेगा तो फिर स्टेबल होना चाहिए। नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मान लीजिए हम स्पीड को डिक्रीज कर दिया, पहले वाला था क्या, इंक्रीज किया, उस एट दैट टाइम द कंडीशन शुड बी टीएल ग्रेटर देन टी। यस सर। बट मान लीजिए हम स्पीड को डिक्रीज कर दिया, व्हाट शुड बी द कंडीशन एट दैट टाइम? तो ये अनस्टेबल होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस टाइम में क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर वो कंडीशन हो गया तो वो अनस्टेबल हो गया, लेकिन वो अगर स्टेबल है तो उस टाइम में क्या कंडीशन होना चाहिए, ये मैं बोल। स्टेबल है तो टीएल ग्रेटर देन टी। वो तो जब स्पीड हमने इंक्रीज कर दिया तब वो चेक कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए हम स्पीड को डिक्रीज कर दिया। मीन्स हम, पहले जहाँ पे थे वहां पे आ गया ना, नॉर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। नहीं देखिए क्या होगा। अब देखिए, हम अगर मान लीजिए स्पीड को डिक्रीज कर दिया तो तब क्या होगा? हमने स्पीड को डिक्रीज कर दिया, अभी क्या हो रहा है, एक टॉर्क यहाँ है, एक टॉर्क यहाँ है, हमने स्पीड को घटा दिया, which torque is more here? मशीन So tell me, if we सर मशीन decrease, तो now tell me, if we decrease, अनस्टेबल। if we decrease the speed, what should be the condition? मशीन टॉर्क ग्रेटर देन लोड टॉर्क। हाँ, अगर नहीं हुआ तो मशीन तो स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा, हम अगर स्पीड को घटा दिए हैं तो उसे तो फिर इंक्रीज करके वही पॉइंट में आना है। पहले क्या कर रहे थे, पहले इंक्रीज कर दिए थे, इसीलिए लोड टॉर्क ज्यादा होने से वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अब अगर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि हम उसके स्पीड को घटा दिया तो उसे तो फिर इंक्रीज करके वही पॉइंट में आना है, तभी तो हम उसे स्टेबल कहेंगे ना। यस सर। So if we increase the speed from the equilibrium point, then for a stable equilibrium point the condition should be
TL greater than T. And if we decrease the speed from equilibrium point, then there should be the conditions is T greater than TL. That means the machine torque should be greater than from the load torque. Otherwise, there is no acceleration and it not come to that point. It is अभी समझ में आया? Yes, sir. Okay. Okay, you may leave now. Thank you, sir.